So, worksheet on probability, question number 1. Events A and B are such that probability of event A occurring is 0.3, probability that event B occurs is 0.8, and probability that both of them occur, probability A and B, equals 0.4. State giving a reason in each case whether events A and B are independent. Now, if you remember from yesterday's lesson, independent means if independent, then probability of A and B, which is also represented by probability A intersection B. This is equals to probability of A times probability of B. So let's see, is it true? Probability of A and B is given as 0.4. Probability of A is 0.3. Probability of B is 0.8. So no, they're not the same. This is 0.24 and that's 0.4. So hence not independent. Okay, that's part 1. Part 2 is are events A and B mutually exclusive? Remember, mutually exclusive events look like this. They did not have any intersection, but this does. There is an intersection. So P A intersection B is not equals to 0. Hence, not mutually exclusive. क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. ओके, क्वेश्चन 2 देखते हैं. Even throws 3 fair dice. List all the possible scores on the 3 dice which give a total of 5 and hence show that the probability of even obtaining the total score of 5 is 1/36. All right. So 3 dices are thrown. 3 dices hota hai, khair, anyway. 3 dice are thrown and what are the possibilities that we get a sum of 5? क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिसमें सम 5 है 3 डाइस को रोल करके? जैसे हो गया 2 2 और 1. So there's a case of getting 2 2 and 1, but there's also the case of getting 2 1 and 2, and there's an also the case of getting 1 2 and 2. So ये 3 cases हो गए. और किसी तरह आ सकता है 5 It's 113. 113 से भी आ जाएगा. ठीक है. So 1 1 3. अब इस 3 को सेंटर में लिख लेते हैं और फिर 3 को स्टार्ट में लिख लेते हैं. और किसी तरह आ सकता है 5. अच्छा, तो फिर अब हमारा जो रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं वो है 6 और टोटल आउटकम्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 5. इसमें न्यूमरेटर में आ गया 6 आउटकम्स है 5 आने के. 6 पॉसिबिलिटीज है 5 आने की. और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? इफ यू थ्रो 3 डाइस टुगेदर, कितने आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है? एक डाइस से कितने आउटकम आते हैं?
6. हाँ 6। 2 डाइस इकट्ठे फेंकने से आते हैं 6 टाइम्स 6 आउटकम्स, 36। और 3 डाइस इकट्ठे फेंकने से आते हैं 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। तो डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, और ये बन गया 1/36। So we have shown that probability that we get a sum of 5 is 1/36. Okay. Second part, find the probability of even obtaining a total score of 7। अब 7 के सारे केसेस देखने हैं कि तो काफी ज्यादा केसेस होंगे। पहले 2 को 1 करते हैं और फिर अगले को 5 करना होगा। सो अब इसके और क्या केसेस हो गए, 5 मिडिल वाले में आया और या 5 पहले वाले में आया। और बताओ और कैसे हो सकता है 7 है। It's 1 2 4 1 2 4 करते हैं। ओके 1 वन, 3 3 एक सेकेंड। ओहो, 1 2 4 तो हम 8 तरह से लिख सकते हैं। 1 2 4 ये आ गया, पहले 1 को फिक्स रखते हैं और 4 और 2 को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक ये केस हो गया। फिर मैं शुरू में 1 ला रही हूँ, सॉरी 2 ला रही हूँ, और फिर इधर 1 4, फिर 2 को फिक्स रखा और यहाँ आ गया 4 और 1। फिर बल्कि नहीं, 6 केसेस है। 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, 6 केसेस है। ऑलराइट, और फिर हम 4 को आगे ले आए और यहाँ आ गया 1 और 2, और फिर हमने 4 को आगे ही रखा और यहाँ आ गया 2 1। सो 6 केसेस हैं 1 2 4 आने के। डिपेंड्स के फर्स्ट टाइम में क्या आया, सेकंड टाइम में क्या आया, थर्ड टाइम में क्या आया। और 1 3 3 ठीक है, 1 3 3, फिर 3 को 1 को मिडिल में ले आए और 1 को एंड में ले गए, 3 3 1। ओके, तो 3 से आ गई, 3 पॉसिबिलिटीज ये हो गई। और किसी तरह बन सकता है 7। अगर फर्स्ट 2 हो, सेकंड भी 2 हो और थर्ड हो जाए 3, ये भी तो हो जाएगा ना। सो वी हैव 2 2 एंड 3। सो अब इसको रीअरेंज करें तो 3 मिडिल वाले डाई पे आ गया, सेकंड डाई पे आ गया, और यहाँ 3 फर्स्ट डाई पे आ गया। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? आई थिंक ये सारी केसेस हो गए, के अलावा नहीं हो सकता। ओके, सो ये हमारे पास कितने आउटकम्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 आउटकम्स आए हैं और टोटल क्या है, 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। तो इससे आंसर आएगा 5/72। ये आ गई प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 आफ्टर थ्रोइंग 3 डाइस। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rachel and Anna play each other at badminton. Each game results in either a win for Rachel or a win for Anna. Probability of Rachel winning the first game is 0.6। I think इसके साथ ही ट्री बना लेनी चाहिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। Probability of Rachel winning
So Rachel wins is 0.6. So that means Rachel loses is this. रेचल के लूज करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और एना की बात हो रही है तो रेचल विंस का मतलब है इधर एना लूजेस और यहाँ पे इसका रेचल लूजेस का मतलब है एना विंस ओके और और ओके सो each game results in either a win for Rachel or a win for Anna. Probability that Rachel wins the first game is 0.6. That means probability that Rachel loses the first game is 0.4. If Rachel wins a particular game, मतलब कि इस केस की बात हो रही है, the probability of her winning the next game is 0.7. So I'm writing RW. और इसका मतलब है कि इधर रेचल के लूज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3. But if she loses, the probability of her winning the next game is 0.4. तो यहाँ पे रेचल विंस आ गया 0.4 और रेचल लूज आ गया 0.6 और रेचल विन का मतलब है एना लूजेस और रेचल लूजेस का मतलब है एना विंस फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट Rachel wins the first game given that she loses the second game. Okay, conditional probability की बात हो रही है. Find the conditional probability that Rachel wins the first game. I'm writing Rachel wins और first game को मैं 1 से represent करूँ. Rachel wins the first game given she loses the second game. Rachel loses second game. Okay. So conditional probability का formula क्या होता था? Probability A given B was probability A and B upon probability B. So this would be probability Rachel wins the first game and Rachel loses the second game upon probability Rachel loses the second game. Okay. So numerator पहले find करते हैं. Probability she wins the first game is this and she loses the second game वो यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे. So the probability is 0.6 into 0.3. Upon probability Rachel loses the second game. अब जो मैंने पिंक लाइन बनाई है उधर भी रेचल सेकंड गेम लूज कर रही है और फर्स्ट गेम लूज करके फिर सेकंड गेम लूज कर रही है यहाँ पे भी रेचल सेकंड गेम लूज कर रही है सो टोटल probability that Rachel loses the second game would be 0.6 times 0.3 from the pink line plus 0.4 times 0.6 from the second line. This would be the answer for the conditional probability, which is 3/7. Okay, part 2. बहुत ही zoom out हो गया. Let me zoom in for a second. Part 2 is find the probability that Rachel wins 2 games and loses 1 game out of the first 3 games she plays. Okay. So, अब हमें एक थर्ड ब्रांच भी बनानी पड़ेगी. थर्ड ब्रांच बनाते हैं. Let me clear this pink line and the yellow line. इसको भी clear कर देते.
So जब रेचल विन करती है the probability that she wins again is 0.7. Yep. And the probability that she loses is 0.3. अगर वो lose करती है तो probability that she wins is 0.4 and probability that she loses is 0.6. फिर अगर वो win करती है तो probability that she wins again is 0.7, probability that she loses is 0.3. और फिर अगर लूज करती है तो अगली लूज विन करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 और लूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.6. Find the probability that Rachel wins 2 games and loses 1 game. So ट्रेस करते हैं ब्रांचेस. विन्स 2 विन करनी है तो विन के बाद विन और फिर लूज. एक तो ये केस हो गया विन विन लूज. मैं लिख रही हूँ विन विन लूज और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 टाइम्स 0.7 टाइम्स 0.3. ओके. और किस तरह हो रहा है विन विन लूज. यहाँ विन किया फिर लूज किया विन लूज और लूज के बाद फिर विन. सो विन लूज विन. Hold on, the board is stuck. Win, lose, win. That's going to be 0.6 times 0.3 times 0.4. ओके. और फिर हमने करना है कि विन करेगी फिर विन करेगी और एक दफा लूज करेगी. तो यहाँ अगर लूज कर दिया the next time 2 times she should win. So from here we go here and from here we go here. So lose win win is also a case. So यहाँ कर ले प्लस lose win win. So 0.4 into 0.4 into 0.7. अब इन सब का सम करना. This comes out to be 0.3. के पता नहीं क्या लिखा हुआ है. I don't have a calculator today. I've misplaced it. ये मेरे पास आंसर लिखा हुआ है 0.3. एक सेकेंड में वर्कशीट के एंड में भी चेक कर लो. क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 का आंसर 0.31 लिखा हुआ. ठीक है. It should be 0.31. Okay. Moving on. Question 4. The people living in 3 houses are classified as children, parents, or grandparents. The numbers living in each house are shown in the table below. House 1 में there are 4 children, 1 parent, 2 grandparent. House 2 में 2 children, 2 parent, 3 grandparent. House 3 में 1 child, 1 grandparent. All the people in 3 houses meet for a party. One person at the party is chosen at random. Calculate the probability of choosing a grandparent. Okay, so ये सारे इकट्ठे हैं एक जगह. One person is chosen from all these people. What's the probability that that person is a grandparent? So how many grandparents do we have in the party? 2, 3, 1, which is 6.
So 6 upon how many total people do we have in the three houses? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. So 6 upon 16 should be the answer. इसको हम round off कर लेंगे 3 upon 8. सही है, correct. Part 2. A house is chosen at random. A house is chosen at random. That means either house 1 is being selected, or house 2 is being selected, or house 3 is being selected. So that means the probability of any house being selected would be 1/3. A house is chosen at random, then a person in that house is chosen at random. Using a tree or otherwise, calculate the probability that the person chosen is a grandparent. Okay, so first you choose a house, then you choose a person in the house. So we have to choose a grandparent. तो इसमें बाकी child और parent की बनाने की जरूरत नहीं है, खाली grandparent की बना देते हैं next बार. Grandparent and grandparent. So the probability of getting a choosing a grandparent in the first house is going to be 2/7. 2 out of 7 people are grandparents. Probability of choosing a grandparent in the second house is going to be 3/7. And the probability of choosing a grandparent in the third house is 1/2. So calculate the probability that the person chosen is a grandparent. So we have to follow these branches. Here to here, then here to here, and then here to here. So take product of the probabilities on the same branch, and then plus sign, and then take probability on sum of probability on the second branch, then a plus sign, sum of probabilities in the third branch. On the third branch, so 1/3 times 2/7 plus 1/3 times 3/7 plus 1/3 times 1/2. Answer should be 17/42. Part 3. Given that the person chosen by the method in part 2 is a grandparent. So given grandparent calculate the probability that there is also a parent living in the house. So house 1 में grandparent है, house 2 में grandparent है. So they're talking about house 1 and house 2. They're not talking about house 3. House 3 में तो grandparent है ही नहीं. Sorry, parent है ही नहीं. So ये conditional probability का case है. Given that the person chosen by the method in part 2 is a grandparent, so given grandparent का case. Given grandparent, find the probability that calculate the probability that there is also a parent living in the house. तो अब ये house 1 की भी बात हो रही है और house 2 की भी बात हो रही है. So house 1 इधर लिख लेते हैं और इधर प्लस करके हाउस 2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी ऐड करेंगे. सो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे. H1 and grandparent upon probability of grandparent plus probability house 2 is selected and grandparent is selected upon probability of grandparent. Probability of grandparent हमने इधर निकाला हुआ part 1 में, part 2 में. So denominator तो दोनों का वही आ गया 17/42 प्लस यहाँ पे भी 17/42. Okay.
प्रोबेबिलिटी हाउस 1 एंड ग्रैंड पेरेंट हमने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है पहले, 1/3 टाइम्स 2/7 plus probability of house 2 and grandparent would be 1/3 times 3/7. हाउस 3 इसलिए नहीं लेना क्योंकि उसमें पेरेंट नहीं. So whatever is the answer of this is going to be the answer of this part, जो आता है 10/70. Okay, moving on to the next question. Single cards chosen at random are given away with bars of chocolate. Each card shows a picture of one of the 20 different football players. Richard needs just one picture to complete his collection. He buys 5 bars of chocolate and looks at the pictures. Find the probability that Richard does not complete his collection. First, we need to try and understand the question. कुछ चॉकलेट बार्स है और उनमें से कार्ड्स निकलते हैं. तो रिचर्ड के पास सारे कार्ड्स हैं ऑलरेडी, उसकी कलेक्शन में एक कार्ड मिसिंग है. तो टू कंप्लीट हिज कलेक्शन ही बायज 5 चॉकलेट्स एंड सीज के क्या उसके पास वो कार्ड निकला है जिसकी उसको जरूरत है. अब हमने फाइंड करना है कि नहीं निकला वो कार्ड that he needed. So what's the probability of that? Find the probability that Richard does not complete his collection. So 20 possible cards हैं. जो उसको कार्ड चाहिए वो 1 है और जो टोटल कार्ड्स हैं वो 20. सो अगर उसको वो 1 पर्टिकुलर कार्ड चाहिए, जो भी ये कार्ड था वो उसको नहीं मिला, तो बाकी कितने कार्ड्स हैं जो उसके पास ऑलरेडी हैं? 19 कार्ड्स हैं जो उसके पास ऑलरेडी हैं. दैट मीन्स इन 19 कार्ड्स में से उसके पास कोई आया था. ये जो एक्चुअल कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है ना, जिसकी उसको जरूरत थी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/20. और जो कार्ड उसके पास ऑलरेडी है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी है 19/20. तो उसके पास वही आए, जो उसके पास ऑलरेडी है वही आए. और कितनी चॉकलेट्स खरीदी? उसने 5 चॉकलेट्स खरीदी. सो every time he got a card out of those 19 cards. So what's going to be the probability? अगर उसने एक ही चॉकलेट खरीदी होती लेट्स से, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी थी कि उसके पास वो कार्ड नहीं आया जो उसको चाहिए था? दैट प्रोबेबिलिटी वाज 19/20, एक चॉकलेट में. सो 19/20 would have been the answer अगर उसने एक ही चॉकलेट खरीदी होती. बट उसने 5 चॉकलेट्स खरीदी हैं एंड एवरी टाइम ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड कार्ड. सो इट्स गोइंग टू बी टाइम्स 19/20 सेकेंड चॉकलेट के लिए. थर्ड चॉकलेट में फिर वही हुआ, नहीं आया वो कार्ड, फिर नहीं आया, फोर्थ में और फिफ्थ में भी नहीं आया. सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 times he did not get the card of his liking or the one card that he was missing. So it's going to be 19/20 power 5. जो भी इसका आंसर आता है. Okay, part 2. He has the required picture exactly once. अब इन 5 times में से एक टाइम पे उसके पास वो रिक्वायर्ड कार्ड आ गया. सो दैट वुड बी 1/20. हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट टाइम पे उसके पास आ गया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया और फिफ्थ टाइम पे भी नहीं आया. This would be the case that
He gets the desired card in the first chocolate, but does not get it in the remaining 4 chocolates. But what if he gets that desired card in the second chocolate? तो फिर हमें 19/20 पहले लिखना पड़ेगा, सेकंड के साथ 1/20 लिखना पड़ेगा, और बाकी 3 के साथ 19/20 लिखना पड़ेगा. Now, what if he gets the desired card in the third chocolate? So he didn't get the desired card in the first chocolate, didn't get the desired card in the second chocolate, got the desired card in the third chocolate, then he didn't get it, then he didn't get it. So अब ये काम इतनी दफा करने के बजाय अब देख लेते हैं कितनी दफा होगा. You have to do this 5 times. एक और रो बनेगी जिसमें 1/20 फोर्थ प्लेस पे आएगा, और एक और रो बनेगी जिसमें 1/20 फिफ्थ प्लेस पे आएगा. So now how do you find this collective probability? You write 5 times. एक दफा 1/20 है, और 4 times there's 19/20. So this would be the probability. 1/20 into 19/20 power 4 times 5. 0.204 is the answer with me. Into 5 जरूर करना होता. Okay. Next is, he completes his collection with the third picture he looks at. So what's the probability that he gets that card in the third picture? So that means he buys the first chocolate, does not get the card. So uski probability is 19 out of 20. Buys the second chocolate, does not get the card, 19/20. Buys the third chocolate and gets the card, 1/20. You stop here. And whatever is the result is the answer. So मेरे पास लिखा हुआ है 0.0545125. That would be the answer. Question 6 would be the last question we do today. In a certain country, 54% population is male. Male probability would be 0.45. Then probability of female would be 0.44. Okay. And then it is known that 5% of the males are colorblind. So colorblind male would be 5%, 0.05. And not colorblind would be 0.95. And out of the female, 2% are colorblind, and 0.98 is the probability of not being colorblind. A person is chosen at random and found to be colorblind. By drawing a tree or otherwise, find the probability that this person is male. Conditional probability का question है. A person is chosen at random and found to be colorblind. So given colorblind, probability of something given that that person is colorblind, find the probability that this person is a male. So male given colorblind. So that would be probability male and colorblind upon probability colorblind. So male and colorblind is this. So 0.54 plus 0.0, sorry, times 0.05. Upon probability of colorblind would be this
टाइम्स ये भी कलर ब्लाइंड वाला केस है और फीमेल भी कलर ब्लाइंड हो सकती है, so ये भी केस है. And these branches 0.54 into 0.05 same as numerator plus 0.44 into 0.02, which gives sorry, this should have been 4.6. This is 4.6. So this should have been 4.6, which gives 0.746. Well, that's all for today. If you have any questions, please ask. Otherwise, I'll see you tomorrow. मैं एक question homework के लिए दूंगी in the group. Allah Hafiz.